The Supreme Court on Thursday raised key questions over the ongoing special intensive revision of electoral rolls in Bihar ahead of the state assembly elections. Now, a bench of Justices Sudhanshu, Dhulia and Joymalya Bagchi heard multiple petitions, including one filed by Association for Democratic Reforms and several opposition leaders challenging the legality and timing of the revision process. आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना गया। एक पक्ष ऐसा है जो चाहता है कि बिहार में जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, जो मतदाता सूची का सत्यापन हो रहा है, उसको रोक दिया जाए। हमारी याचिका, हमारी मांग ये है कि ये सत्यापन चलना चाहिए, डोर टू डोर चलना चाहिए। हमने ये कहा है कि वोटिंग फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है। अगर वोटर लिस्ट में एक भी रोहिंग्या का नाम है, एक भी घुसपैठिए का नाम है, उसको काटा जाना जरूरी है। बिना जब तक घुसपैठिए भारत में वोट करेंगे तब तक इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका पे भी और जो दूसरा पक्ष चाहता था कि ये रुक जाए, दोनों पक्षों की याचिका पे इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। हमारी याचिका में सारे राज्य सरकारें भी पार्टी हैं, इसलिए उनको भी नोटिस जारी किया है। 28 जुलाई को इस पे सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से साफ साफ मना कर दिया है। जो इलेक्शन कमीशन का जो ड्राइव चल रहा है, स्पेशल ड्राइव चल रहा है डोर टू डोर जाके, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं रोक लगाया है। दूसरी तरफ से मांग की गई थी कि आधार को और राशन कार्ड को और वोटर लिस्ट को भी शामिल करने के लिए गुजारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो उन तीनों डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे, ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। टाइमलाइन को लेकर काफी सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ने कि एक्सरसाइज खत्म हो पाएगी कि नहीं आने वाले इलेक्शन से पहले। माननीय सुप्रीम भी दिए कि अगले इलेक्शन में करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि क्या इलेक्शन के पहले पहले ये ड्राइव पूरी हो जाएगी। उस पे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 60% लोगों का सत्यापन डॉक्यूमेंट पहले आ चुके हैं, केवल 40% बचे हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने भरोसा दिया है कि बिहार चुनाव के पहले ये जो इंटेंसिव ड्राइव हो रही है, जो गहन पड़ताल चल रही है, ये पूरी हो जाएगी। थैंक यू। The Apex Court orally observed that removing non-citizens from the voter list is not the Election Commission's job, but the prerogative of the Union Home Ministry. The court, however, allowed the EC to continue with the preparation of draft electoral rolls and has scheduled the next hearing for July 28th, just before the final roll is published. Senior advocates Gopal Sankar Narayanan and Abhishek Manu Singhvi argued that the SIR process unfairly shifts the burden of proof of citizenship onto voters, especially those already enrolled. SC questioned senior advocate Rakesh Trivedi, appearing for the Election Commission, over the exclusion of Aadhaar card in the SIR drive in Bihar and said the ECI had nothing to do with citizenship of a person and it was the Ministry of Home Affairs domain. For context, many opposition leaders, including Tejasvi Yadav, have raised concerns over the required documents for the enrollment and have urged EC to add Aadhaar card in the list. The Election Commission in its defense cited Article 3 to 6 of the Constitution, saying citizenship is a prerequisite to be on the voter list, and also countered that Aadhaar is not proof of citizenship. The Supreme Court also questioned the Election Commission of India on the timing of the special intensive revision drive in poll-bound Bihar, saying it went to the root of democracy and power to vote, while rejecting the argument that the poll panel did not have any power to carry it out. With over 10 petitions filed and opposition leaders across parties, including Mahua Moitra, Manoj Jha, Supriya Sule, challenging the EC's order, this legal battle could have a significant impact on the upcoming Bihar elections and other state elections as well. Bihar's ongoing special intensive revision of electoral rolls has sparked concerns across the state. Now, what's notable is that this exercise differs from the previous ones in two significant ways. Firstly, it requires already enrolled voters to prove their citizenship during the draft roll stage, shifting the burden of proof onto them. This move has led to apprehensions and is set to be discussed in the Supreme Court. To sum it up, 3 points of challenge are the power of the ECI to conduct the special intensive revision, the procedure adopted by the ECI, and the timeline for conducting the special intensive revision, which is right before the Bihar Assembly elections in November. Stay tuned with the Indian Express as the top court resumes hearing on July 28th.